हमारे आशा वर्कर या हमारे कोई भी पेशेंट होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जन संवाद प्रॉब्लम ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। वो अच्छी बात है। ऐसा प्रोग्राम हो तो हमारी मन की बात जो भी हो हम उसके साथ हम शेयर कर सकते हैं। पहले बस्ती में गर्भवती महिला, शिशु, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर रोगी, वो लोग क्या है जाते नहीं, जान नहीं था। वो अभी क्या है ना, अभी जान पाते थे। हम लोग जब यहाँ पे एक गठन किया है ना, वो भी जान पाते थे। वो अब हम लोग उनको लेके मेडिकल जाते थे। अभी क्या है ना, वो डायबिटीज़ चेक करने के लिए मेडिकल हम लोग लेके जाते थे। उनको डायबिटीज़ कहाँ चेक करना है, वो मेडिसिन कहाँ खाना है, वो डॉक्टर कहाँ पे दिखाना है, वो हम लोग को बता देते थे। We have got active asas here working here. They are fully involved with the community. I would like to say that Health and Wellness Center is a model through which we can show the people to get the health services freely. जनसुनवाई ही फार चांगली उत्तम गोष्ट आहे आणि लोकांना ती आवडते की लोकांच्या दृष्टीने की अर्ज देणं मग त्याच्यावर फेऱ्या मारणं हे करण्यापेक्षा समोरासमोर जे आहे, जो देणार आहे, जो मागणार आहे तो समोरच असतो, त्यामुळे तिथल्या तिथं त्याचं उत्तर मिळतं। त्यामुळे जनसुनवाई फार महत्त्वाची आहे। To strengthen the accountability and functioning of the health systems, Community Action for Health empowers community-based institutions through awareness generation, strengthening village health, nutrition and sanitation committees, Mahila Arogya Samitis and Rogi Kalyan Samitis, planning and monitoring committees, community inquiry and facility survey, report cards and health plans, and Jan Samvad. To further secure the community's participation, Community Action for Health demonstrated innovative and effective interventions across the country like health and wellness centers, social audits, urban community monitoring, and Rogi Kalyan Samiti. The role of AGCA, the Advisory Group on Community Action, is to support government officials, government functionaries in communitization and creating greater accountability by the community, which is really bringing public into public health. With the support of the Advisory Group on Community Action, the Secretariat for which is hosted by the Population Foundation of India, today Community Action for Health is spread across 24 states, 2,24,186 villages and 352 districts, ensuring access to equitable, affordable and quality healthcare. A unique intervention, Health and Wellness Centers, was initiated in 7 aspirational districts with 222 Health and Wellness Centers and 1,110 village health, sanitation and nutrition committees in Assam. With the development of a monitoring toolkit and the training of trainers and village health, sanitation and nutrition committee members to support monitoring of the centers, a total of 3,200 village health, sanitation and nutrition committee members have been equipped with tools and skills to monitor health and wellness center services. आमार एटू किबा स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रत आहू आरो आहू ते बहुत बेमारर किबा भाले औषध पानी पाऊँ एटू किबा केन्द्रत एने ज्वर मूरर বিষৰ কাৰণে পেটৰ বিষৰ কাৰণে কিবা ঘাও চাও হলে ইয়াত আহোঁতে ঔষধ পানী ভালে পাওঁ কিবা ডেলিভাৰীৰ কাৰণে বিশেষকৈ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ভাল। अभी जो देख रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने और नर्स ने, और यहाँ के जो गाँव वासी है, निवासी है, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, बहुत देर करते हैं। जो जिस दिन डॉक्टर ने हम लोगों को बुलाते हैं, गाँव वासी को बुलाते हैं, आते हैं, योगदान देते हैं। इस तरह से सबके मिलजुल के काम करने से यहाँ जो भी माहौल हुआ है बहुत अच्छा लगा है।
Under Advisory Group on Community Actions guidance, a simple initiative of developing a localized toolkit has had far-reaching effects. As the communities are now mobilized to access healthcare, comprehensive feedback on the functioning of health and wellness centers have enabled the identification of gaps contributing to the betterment of the health and wellness centers. The basic impact, if you ask me, I will say is that about 7 to 10% of the population who are older than 30 years have already been screened, and in some of the districts we have been able to identify cancer patients much earlier than the normal routine. At the same time, we are also able to generate an idea of positive health, an idea for good food, good healthy practices, good exercise, good way of living is being generated. रोगी कल्याण समिति की जो बुनियाद है वो मध्य प्रदेश में डली थी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का भी गठन नहीं हुआ था। उससे पहले हमारे यहाँ पर एक अफसर जो आजकल मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये सोचा कि अस्पतालों को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए इधर क्यों भागना पड़ता है बजट के लिए, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें वो रोगी कल्याण समितियाँ गठित की जाएँ अस्पतालों में, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करें, डोनेशंस भी आएँ, सरकारी मदद भी आए और दूसरी मदद भी आए, और उससे जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको ठीक करने की शुरुआत करें और धीरे धीरे उन बुनियादी चीज़ों का दायरा बढ़ाते जाएं। शुरुआत साफ़ सफाई से हो सकती है, बिजली के बल्बों से हो सकती है, फिर बाद में आप दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, रेफरल ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकते हैं, डाइट में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और वो असीमित संभावनाएं खोलने के लिए रोगी कल्याण समिति का सृजन हुआ। It's really critical that Rogi Kalyan Samitis come to the forefront in ensuring patient empowerment and patient responsiveness. Because citizen engagement is so critical for health insurance schemes which PMJ represents, strengthening Rogi Kalyan Samitis and the PFI effort needs to be scaled up, and much more dissemination of this needs to be done. However, general lack of awareness about Rogi Kalyan Samiti roles and responsibilities, irregular meetings of Rogi Kalyan Samiti members, and absence of a patient-centric approach in fund utilization was in many cases limiting the effectiveness and functioning of Rogi Kalyan Samiti. To address this issue, Advisory Group on Community Action advised the Uttar Pradesh state government in a pilot to improve the efficacy of the Rogi Kalyan Samiti. The initiative had 3 clear objectives: effective monitoring of maternity health service delivery followed by corrective action, strengthening institutional mechanisms for quality improvement and grievance redressal, and dissemination of the pilot's learning and outcomes with the Ministry of Health and Family Welfare and state governments. रोगी कल्याण समिति से जो हमको फंड प्राप्त होता है उससे मरीजों को सुविधा देने में हमें बहुत आसानी रहती है। पहले हमको ये सब चीज़ें डिमांड करनी पड़ती थी सीएमओ ऑफिस से, उसको आने में समय लगता था जिससे मरीजों को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती थी। अब हम तुरंत उसको खरीद सकते हैं, मरीज को तुरंत सुविधा प्रदान कर सकते हैं। Such results encouraged the Uttar Pradesh state government to scale up the program. What started with 27 public health facilities in Lucknow was scaled up to an additional 523 facilities in 30 districts. Strengthening of Rogi Kalyan Samitis has improved community participation in decision making at the facility level and enhanced the facility's responsiveness to people's health needs. The health facilities which were scaled up have shown the following results. 60% facilities organize monthly meetings of Rogi Kalyan Samiti Executive Committee. 95% facilities are seeking client feedback through suggestion complaint boxes and registers. 71% facilities have constituted grievance redressal committee to discuss client feedback. And 60% facilities completed their financial audit for financial year 2018-19. Training and empowering the community members is not restricted to the rural populace.
Community Action for Health has had resounding successes even in urban centers. जहाँ महिलाएं लीडरशिप लेती है तहाँ मुझे भी एक विश्वास है कि कोई भी प्रोग्राम, नॉट हेल्थ बट कोई भी प्रोग्राम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका हम अच्छा सा बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं और गैप एनालिसिस कर कर करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। सो जैसे जैसे महिलाओं को भी मतलब महिला आरोग्य समिति जो भी हमारे पूरे पीएससी यूपीएससी के अंदर जो बनी है उसके सब मेंबर को हमने ट्रेन करने का भी चालू कर दिया है। ऑलरेडी मोर देन 4000 से भी ज़्यादा महिला आरोग्य समिति है, उसको ट्रेन किया गया। नाउ अभी काफ़ी जो लास्ट स्टेप है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद एक चेकलिस्ट बना गया है, जैसे आइडियल है कि उनको वहाँ सेफ वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा, या तो वहाँ आंगनवाड़ी अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है नहीं मिलता, उनका हाइजीन कैसा है, वो सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड है बट अल्टीमेटली हेल्थ से रिलेटेड है। सो उनका भी उनको क्वेश्चनरी जो डिज़ाइन बनाया था वो भी सबको दिया गया। तो गुजरात में हमने लास्ट माइल्स जो स्टोन होता है जन संवाद, वहाँ तक भी पहुँच गए। अभी मोर देन 18 जन संवाद इस साल हो गए हैं और ये जो प्रोसेस है वो हम कभी मतलब रुकने वाले नहीं है। Mahila Arogya Samitis have taken a lead in mobilizing communities and monitoring of health services across many cities in India. यहाँ पे गुजरात में सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत ही अच्छी है, लोग काफ़ी जागरूक हैं अपने अधिकारियों के प्रति और साथ साथ उन्हें जब भी कोई प्रश्न आता है तो यहाँ पे लोग प्रजा के जो अन्य प्रतिनिधि हैं उन तक भी अपनी बात पहुँचाते हैं। यहाँ पे तंत्र में एक्सेसिबिलिटी भी बहुत है, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या पदाधिकारी हैं उन सबके मोबाइल नंबर्स पब्लिक डोमेन में हैं, कभी भी किसी को भी कोई व्यक्ति संपर्क कर सकता है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो जो भी प्रश्न होते हैं उनका जल्दी से समाधान आ जाता है। ये मास कमेटी जो हम ज्वाइंट करते हैं उससे हमें अलग अलग किशोरियों के बारे में ये लोग जो हमको माहिती देते हैं वो हम लोग लेते हैं और फिर ऐसी कोई किशोरी होती है जिसने ज्वाइंट नहीं किया हो, वो अगर हमें मिल जाती है तो हम उसको विस्तार से बताते हैं, उसे समझाते हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने की समझ देते हैं, गंदा कपड़ा नो यूज़ करने की समझ देते हैं, टॉयलेट यूज़ करो, खुले में नहीं जाओ, ये सब हम स्वच्छता के बारे में हम भी थोड़ी समझा सकते हैं। In addition to community training and empowerment, actual citizen involvement has been particularly successful through the initiative of social audits. National Health Mission has collaborated with the social audit cells in Jharkhand, Meghalaya, Uttarakhand to undertake systematic audit of health services. Social audits are powerful tools to facilitate state government decisions and bring community feedback. This is essentially, changing the entire, way the programs are implemented. Because generally the government, does implement different programs, but it won't get an independent feedback from the communities. So the Social Audit Act actually provides that independent feedback, from the communities, how the programs are implemented. In fact, communities, the people can get to know how the funds are, utilized by the government. So the Social Audit, Act that what the government of Meghalaya has brought in is essentially empowered people in terms of accessing their rights and entitlements, and also it also provides, the government a mechanism to, correct if there are any, corrections to be made. Building awareness about health schemes, door-to-door interactions, focus group discussions with different groups in the village such as women, adolescents, preparation of village-level report cards and village meetings to incorporate feedback form the basis of the social audit process. Collation of ground-level realities from ultimate beneficiaries not only leads to an immediate strengthening of local health facilities but also facilitates evidence-based policy change at the district and state levels. From community empowerment to citizens' participation through social audits,
Community Action for Health has been successful in identifying and reaching out to every member of the healthcare system. Community Action for Health has shown us that investing in communities has immense potential to change the health status of 1.3 billion people in the country. Join us in our commitment of bringing public back into public health.